Good afternoon, students. In this lecture, we are going to discuss the three algorithms of page faults. Okay, now we start with first in, first out algorithm. Page replacement algorithm के category में आते हैं ये सारे. Optimal page replacement algorithm, first in, first out page algorithm, and the third one is least recently used algorithm. Least recently used page algorithm. तो ये तीनों ही आपके पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स में आते हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम. To start with, first in first out algorithm, as you can see on your screens. This is the simplest page replacement algorithm. In this algorithm, the operating system keeps track of all pages in the memory in a queue. So queue means first come, first serve. The oldest page is in the front of the queue. When a page needs to be replaced, the page in the front of the queue is selected for removal. So this is the principle of this algorithm, working principle of this algorithm. To have an understanding of this algorithm, let's take an example. Page reference string is of 130356. ये page reference string है और there is a 3-page frame being used. Means एक frame में I can handle 3 pages at a time. So 3-page frame is being used here. Find a number of page faults that happen in this page reference string with 3-page frames. So we see that in the first frame, when there is a first page being allotted to a frame, it gets included in the front of the frame, okay, as a queue. Then third reference में third page का reference आया, it is get stored over here. 0 means 0 over here. तो जब आपके first page, third page and 0th page is being allocated to a frame, there is no pages over here or matching pages over here in the first 3 steps. तो ये miss लिखा हुआ है. Miss means page miss, page hit. Okay, page miss means there is a fault, और miss means page fault. आपको नहीं मिल रहा है कोई मैचिंग पेज, तो आपको वो पेज उस फ्रेम को एलोकेट करना पड़ेगा. तो ये 3 एलोकेशंस यहाँ पे हुए. सो 3 पेज फॉल्ट हो गए. मिस मतलब पेज फॉल्ट. जब ये रेफरेंस स्ट्रिंग का 4th पेज बीइंग एलोकेटेड, तो जब ये 4th पेज एलोकेशन के लिए आया, तो वी फाउंड दैट 3rd पेज इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन माय फ्रेम. तो देयर इज नो नीड फॉर फ्रेश एलोकेशन. तो दिस इज नोन एज पेज हिट. जो 3rd पेज हमें एलोकेट करना था फ्रेम को, वो पेज ऑलरेडी मेरी मेमोरी में फ्रेम में मौजूद था. सो दिस इज कॉल्ड पेज हिट. तो पेज हिट जितना अच्छा होगा उतना हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा. तो since already 3rd page is existing, I don't need to allocate any page to it. Next we have 5. अब 5th page allocate करना है which is not existing in my frame. Okay, so I need to replace, और मेरी capacity full है. You can see there was a 3-page frame. तो एक frame में at a time only 3 pages can be allocated maximum. तो अब 5th page को हम कहाँ allocate करें? तो first page was the first one to be allocated. तो first come first serve, जो सबसे आगे लगा होगा क्यू में उसको डिलीट करेंगे और वहां पे ऐड हो जाएगा ये 5th पेज. राइट, ये हो गया. अब 6 को अगर ऐड करना है तो ये भी नहीं है, ये भी पेज फॉल्ट है. ये पेज हमें यहाँ मिलता नहीं है अंदर, तो हमें इसको एलोकेट करना है मगर हमारे पास जगह नहीं है. तो नेक्स्ट ओल्डेस्ट पेज इज 3. तो 3 विल बी रिप्लेस्ड विद द 6th पेज. तो 5 and 6 over here. Then 3rd will be allocated at 0th. 0th page will be allocated. This is the next oldest page. तो ये यहाँ पे हो जाएगा. तो if you see कहाँ पर miss कहाँ पर hit लिखा हुआ, तो there are 6 misses over here and 1 hit. तो number of page faults कितने हो गए? 6. तो total page fault in this question is 6. तो इसी question का ये explanation has been given in the example. Initially all slots are empty, so 1 3 0 came, they are allotted to 3 empty slots, so 3 page faults occurred over there. When the 3rd page comes, it is already in the memory, so 0 page fault, that is page hit हुआ वहाँ पर. 5th 6th के लिए भी, and even finally when 3 comes, so it is not the oldest one, so we'll have to allocate it to it. So 1 2 3, another 3 page faults, so total 6 page faults have occurred in this scenario. Now, what are the advantages and disadvantages of FIFO? I've given it to you. It is uses simple method and easy to use, and it does not give
more overhead, कुछ additional overhead नहीं होता है in FIFO page replacements. Disadvantage, worst performance, don't use frequency of last use time, just replace the oldest page, and getting increase the page falls while increasing the page frames. तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं as far as FIFO page replacement algorithm is concerned. सबसे बड़ी पेज इसकी डिसएडवांटेज है Bellede's anomaly. Bellede's anomaly proves that it is possible to have more page faults when increasing the number of page frames while using the FIFO page replacement algorithm. मतलब अगर हम ये 3 पेज एल्गोरिदम फ्रेम पेज यूज कर रहे हैं तो हमारी 6 पेज फॉल्स हैं. अगर हम इसमें अपने नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज कर देंगे, ओके, तो हमारी पेज फॉल्स भी इंक्रीज हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर दिस रेफरेंस स्ट्रिंग, आप इसका बना सकते हो FIFO एल्गोरिदम का डायग्राम, एंड 3 स्लॉट्स का फ्रेम यूज करें तो वी गेट 9 पेज फॉल्स. और अगर हम 4 स्लॉट्स का पेज यूज करेंगे फ्रेम तो वील गेट 10 पेज फॉल्स. तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द फ्रेम, the number of page faults increase. So this is known as Bellede's anomaly. Next you can see is the optimal page replacement algorithm. In this algorithm, pages are replaced with which could not be used for the longest duration of time in the future. This algorithm replaces the page which will be not referenced for so long in future. Although it cannot be practically implementable, but it can be used as a benchmark. Other algorithms are compared to this in terms of optimality. अब ये थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल एल्गोरिदम है क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं मालूम, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट ये उसी पर बेस्ड है. हम इसमें उस पेज को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं एट द टाइम ऑफ पेज एलोकेशन जिसकी प्रोबेबिलिटी इन फ्यूचर टू बी यूज्ड इज लीस्ट. ओके, so that you in a sense you could say it is the opposite of LRU, least recently used. जो LRU algorithm है that is based on past performance and this is based on future performance. So consider the page reference string 701 203 042 3032, ठीक, with 4 page frame. तो ये string है और number of slots in my frame are 4. तो पहले 4 स्ट्रिंग्स हम एज इट इज एलोकेट कर देंगे 7012 7012, ये सारे पेज फॉल्स है, फर्स्ट 4 तो पेज फॉल्स है. फिर जब 5th वाला 0 आया तो 0 वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो ये पेज हिट हो गया. 3 के लिए जब हम आए तो आउट ऑफ दिस 4 pages pre-existing in my frame, which particular page I'll be replacing? I replace 7 because I see that 7 is nowhere being used in near future. तो 7 will replaced by 3. ये यहाँ रिप्लेस होके आ गया. फिर ये हो गया मिस पेज फॉल्ट. ओके, अब उसके बाद 0 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, 4 को एलोकेट करना है तो 4 के लिए आई लुक कि विच पेज नीड टू बी रिप्लेस्ड. 4 को हमने रिप्लेस किया 1 को 4 से. क्यों? क्योंकि आई फाइंड दैट कि 1 is nowhere being used. I find that 0, 2 are frequently required. तो I'll not touch. Ideally in FCFS algorithm first in first out वाले में तो 0 should have been replaced because 0 is the next oldest page in the frame. But I find that key in the given page reference string 0 is being frequently accessed. So I'm not going to disturb 0 from my frame. I'm going to replace 1 because according to the given page reference string 1 is nowhere being used in the future. So 1 will be replaced by the 4th number page. So this is being replaced over here. Then 2, 3 are already existing, 0 is already existing, 3 is already existing, 2 is already existing, 3 is already existing. So this seems to be the best algorithm because इसमें number of page faults कम है, right? इसमें hit ज़्यादा है. As you can see, number of hits are more than number of page faults. Number of page faults first 4 वाले हुए, फिर एक 3rd के लिए हुआ और एक 4th के लिए हुआ. That's it. तो टोटल कितने आपके पेज फॉल्स निकल गए? 6 है, ये गलत लिखा है. टोटल 1 2 3 4, हाँ 5 and 6 पेज फॉल्स हैं आउट ऑफ द गिवन ऑल द पेजेस. सो दिस इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हो गया. 4 पेज फॉल्स है, फिर फर्स्ट एंड फिर 4th के लिए, 3rd and 4th पेज के लिए. Optimal page replacement is perfect but not possible in practice as operating system cannot know future request. ये तो क्वेश्चन था, इसमें तो दिया हुआ है तो हमें मालूम है, बट एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी नहीं पता चल सकता पहले से कि आगे आने वाले टाइम में कौन सा पेज रिक्वायर्ड होगा, कौन सा पेज रिक्वायर्ड नहीं होगा.
So the use of optimal page replacement is to set up a benchmark so that other replacement algorithm can be analyzed against it. Easy to use advantage, easy to implement, and excellent efficiency. And disadvantage is more time consumption, future awareness of the program, difficult to error handling, not easy to implement because operating system will not be able to trace the future request. ये इसका disadvantage है. Now coming to the last type of page replacement algorithm in our session is LRU algorithm, least recently used algorithm. In this algorithm, ये opposite है, as I said, of optimal page. Optimal page में future referenced pages को consider किया जाता है. इसमें past के referenced pages के performance के basis पे हम replacement करते हैं. That is, the algorithm replaces the page which has not been referenced for a longer time. Okay, this algorithm is just the opposite to optimal page. In this, we look at the past instead of the future. So ये page reference string दिया है, again same question with 4 page frames. Now you find the number of page faults. तो इसमें first 4 तो page faults होंगे ही होंगे. 5th page जब हमारे पास आएगा 0 तो वो already existing है, page hit होगा. 3 के लिए हम 7 बहुत दिन से था मेरे पास यूज नहीं हुआ, 7 को रिप्लेस करेंगे. फिर उसके बाद हम आएंगे तो अब हम 0 को नहीं रिप्लेस करेंगे क्योंकि 0 पे मुझे एक हिट मिल चुका है. तो 1 को अभी तक हिट नहीं मिला है तो इसलिए हम 1 को रिप्लेस करेंगे विद 4. तो 4 पेज को अलॉट करने के लिए 1 इज बीइंग रिप्लेस्ड क्योंकि बहुत समय से 1 इज नॉट बीइंग यूज्ड. एंड अगेन 2 3 0 2 3 0 एज इट इज हिट मिलते चले जाएंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेज फॉल्स आपके क्या हो गए? अगेन 6 हैं, मगर अब आगे आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा हो गया बिकॉज आपने जो पेज रिप्लेस किया वो 0 की जगह ऑप्टिमल में सेम स्ट्रिंग में 0 वाज बीइंग रिप्लेस्ड, इसमें 1 इज बीइंग रिप्लेस्ड. So this is the working of LRU. LRU is considered to be the most efficient of all the page replacement algorithms, and it helps to open for full analysis and easy to identify the faulty pages that is not needed for a long time and not getting more like it does not suffers from Belady's anomaly. Or disadvantage, it is more complex to implement and need to have additional data structure, more expensive, and need to highly hardware support. So ये कुछ उसके disadvantages हैं. Basically, children, you need to understand the algorithm and the question given, because every time you get a question in your exam, you need to solve this question by making this kind of a diagram and then explaining the number of page hits and number of page faults incurred by using this algorithm. Many times, if it is a very long question, you get a 1-page reference string and you are asked to apply all the 3 algorithms to it, so to have a comparative study. So I hope I have made all the 3 algorithms clear to each one of you. And that's all for this video lecture. Thank you.